चलो गुरु। Yes. Yes, ma'am. I'm starting my topic. Yes. Technique of the ECG was discovered by Dutch physiologist Antoine William, who is called the father of ECG. Born 1860 in the Dutch Indies, awarded 1924 Nobel Prize for the discovery of ECG. Discovery changed the way of practice of medicine. Basic principle of ECG: impulses generation in the conducting system of the myocardium. You know, myocardium में एक राइट हार्ट के चैम्बर में एक एसए नोड होता है और एसए नोड पर मिनट 72 इंपल्स पास करता है और उसके बाद में ही इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी वहां स्टार्ट होती है. एक्साइटेड ऑफ द मायोकार्डियल मसल्स. Second is the weak electrical current generation recorded by the placing of the electrodes on the various parts of the body and connecting them of the ECG machine. Definition of the ECG: electrocardiogram. ECG is the graphical recorded electrical activity of the heart. Electrocardiograph is the instrument used for the record of the electrocardiogram. Is called a electrocardiograph. इसमें एक बात प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो जब ईसीजी निकाला है तो उस ईसीजी का जेरोक्स पेपर निकाल के रखना जरूरी है. बिकॉज ऑफ दैट कि वो ईसीजी का जो इंक काफी दिन के बाद में जाता है, इसलिए वो रिकॉर्ड डेट और टाइम के साथ मेंटेन करना इट शुड बी मस्ट. यूजेस ऑफ द ईसीजी: इट गिव्स द वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्डियक अरिथमियाज. रिदम मींस ताल और लय. ये रिदम अगर बिगड़ जाता है तो 0.8 सेकंड में जो कार्डियक साइकिल पूरी होना जरूरी है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए अरिथमिया वहां है तो नहीं, ये देखना अपना काम है उसमें. और एंड कंडक्शन डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड इस्कीमिया और इन्फेक्शन. इस्कीमिया मींस कोरोनरी इनसफिशिएंसी. जब अपने बॉडी को पूरा जो ब्लड लगता है वैसे ही खुद हार्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट लगती है, तो अगर फुलफिल नहीं हुई तो नीचे से लेके 2 मंजिले तक अगर आप चढ़ते हो तो आपके चेस्ट में हल्का सा पेन होता है, दैट इज कॉल्ड इस्कीमिया. और इन्फ्रास्ट मींस द कार्डियक अरेस्ट. ये जो कार्डियक अरेस्ट है इसका भी समझ में आएगा. और मायोकार्डियम चेंबर इनलार्जमेंट, ये मायोकार्डियम चेंबर इनलार्जमेंट इसमें होती है और इम्बैलेंस वहां होता है. इसकी वजह से आपको ईसीजी के यूजेस और उसके लिमिटेशन समझना जरूरी है. इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम एंड पोटेशियम रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ECG के limitations of the ECG. ECG does not give the information about the contractility of the myocardium about valvular disease. ये आपको डायग्नोस नहीं करेगा. इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं, सेल द पोलराइज outside of the cell having positive charges and inside having a negative charges. Depolarized cell, when the muscle cell is the stimulated of the positive ion flow inside the cell, and negative ion migrate the surface. Repolarized cell, during recovery of the positive ions return of the outer surface and the negative ion migrate back on the cells. Depolarization means positive deflection on the ECG paper. Repolarization means negative deflection of the ECG paper. ECG पेपर जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, जब तक हम ECG प्रॉपरली रीड नहीं कर सकेंगे. इसलिए ECG का जो भी पैरामीटर है ECG के वो समझना काफी जरूरी है. X axis represent the time, Y axis represent the voltage. Small spare 0.04 second horizontally, 0.1 microvolt vertically, and large spare 0.2 second horizontally, 0.5 microvolt, that is called a vertically. ECG leads. This is the very important part of the ECG leads. ECG leads are the different point of the view for the electrical activity of the heart. There are the 12 leads. One is bipolar limb leads. There are 3 leads. Augmented limb leads. There are also 3 leads. And chest leads V1 to V6. That is called a chest leads, 6 leads. Bipolar limb leads. What is the meaning of bipolar? Bipolar means 2 electrodes placed on the different point of the heart. 2 placed on the different point of the heart. Lead 1, negative terminal on the right arm.
positive terminal on the left arm, current flow from the SA to AV node horizontally. इसमें एक बात देखेंगे कि जब SA नोड का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो वहां से AV नोड से इंपल्स जनरेट होना चालू हो जाता है. AV नोड से अगर प्रॉपर नहीं चलता है तो पर्किंजी फाइबर तक चले जाता है. पर्किंजी फाइबर से नहीं होता है तो इसमें अगर कार्डियक ब्लॉक के साइन सिम्टम्स अपने को उसमें समझ में आ सकते हैं. नोड ऑफ द हॉरिजॉन्टली. लीड थर्ड, नेगेटिव टर्मिनल ऑन राइट आर्म, पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द लेफ्ट फुट, करंट फ्लो SA to AV about to below. Lead third, negative terminal on the left arm, positive terminal on the left foot from AV to Purkinje fibers. Anatomical graphical group presentation है. Lateral, one is lateral, second is inferior, third is inferior. AVR none, AVL lateral, AVF inferior. V1 to V6 this is the chest leads. V1 is the septal, V2 is the septal, V3 is the interior, V4 is the interior, V5 lateral and V6 lateral. Augmented limb leads. Augmented means voltage incremented for the inconvenience of ECG reading. Right arm plus left leg, negative terminal indifferent of the electrodes. AVR, indifferent electrodes, negative right arm, positive. AVL, indifferent electrodes, negative left arm, positive. AVF, indifferent electrodes, negative left foot, this is the positive. After that, the chest leads, very important leads for the chest leads. Their leads detect to electrical potential at the specific point of the on chest wall. V1, fourth intercostal space at the right sternal border. V2, fourth intercostal space left sternal border. V3 to V4, equidistance between V2 to V4, and V4 is the fifth intercostal space mid clavicular line. V5, fifth intercostal space to the anterior axillary line, and V6 is the fifth intercostal space mid axillary line. Interpretation of the ECG, this is the very important part of the interpretation. Interpretation की leads कितने होते हैं ये देखना जरूरी है. There are 5 ways on the ECG paper: P, Q, R, and ST. P, Q, R, ST. There are 5 in the ECG, and 2 is the isoelectric line. PQ and ST. Represent the atrial depolarization means contraction. Duration, this is the 1.12 second, 3 small spares. Voltage 0.25 microvolt, 2.5 small spares. Abnormal condition में PO कैसा दिखता है ये समझना अपने जरूरी है. Bifid P wave means P wave की जगह ऐसे 2 जगह कर्व लगेंगे. That is called a P wave in the left atrial enlargement. जब लेफ्ट आर्टिया के enlargement होती है वहाँ बिफिड P wave वहाँ अपने को प्रेजेंट मिलेगी. और पीक P wave in the right atrial enlargement, राइट atrial enlargement पीक मीन्स एकदम टोकदार ऐसी जो P wave है वो समझ में आएगी. This is the P wave by feed P wave. QRX complex. QRX complex produced by the ventricular depolarization means contraction. This is a very important part क्योंकि contraction जब powerful होता है जब ही systemic blood flow अच्छा वहां से पास होता है. Y complex, current flow in the many direction, spike formation of the fast sodium channel blocker present in the ventricular cell. ये ventricular cell में सोडियम चैनल ब्लॉकर रहते हैं और इसकी वजह से उसका फंक्शन प्रॉपर होता है. ये इधर बताया गया है कि QRS complex produced by the ventricular repolarization. T wave डायग्नोसिस के लिए T wave बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है. डेवलप्ड बाय द ventricular repolarization, duration 0.15 seconds. Why positive reflection? Depolarization start from the base while repolarization start from the apex of the heart. Abnormal T inversion after AMI means anterior myocardial infarction or ischemia. Tall T wave that is called a hyperkalemia. ये hyperkalemia की वजह से tall T wave यहाँ अपने को present समझ में आएगी. This is a tall T wave. After that U wave represent the slow repolarization of the ventricles. इसमें धीरे धीरे ventricles में blood आना चालू हो जाता है. That is the slow repolarization of the ventricles.
स्मॉल एंड लेस देन 1 मिलीमीटर का जो ड्यूरेशन है। सेकंड इज द इंटरवल। इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा क्योंकि क्यू आर एस टी यहाँ तक का उसका ड्यूरेशन है। दिस इज द क्यू टी इंटरवल represent the time for the both ventricular depolarization and repolarization to the occur, and therefore roughly estimated the duration of the average ventricular action potential. This interval can be ranged from the 0.2 to 0.4 seconds depending upon the heart rate. For example, heart rate 72 की बजाय 100 होता है तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं। This is the मार्कर बता रहा है कि चेंजेस कैसे आ सकते। दिस इज द जे पॉइंट। जंक्शन between the end of the QRS complex and the begin of the ST segment. This location is the ST segment. ये ST segment के बाद में आगे का जो segment आता है उसके बाद में एक्सिस के बारे में बात करेंगे। It is a deflection of the flow of the electrical potential. Depolarization start from the base to apex, hence normal vector from the base to apex of the heart. नॉर्मल जो डिग्री है दैट इज कॉल्ड एवरेज 30 डिग्री प्लस 120 डिग्रीज। इन हाइपरट्रॉफीज एक्सिस शिफ्ट टुवर्ड्स द हाइपरट्रॉफिड एरियाज। हार्ट रेट जब तक पेपर ईसीजी पेपर का रीडिंग प्रॉपर समझ में नहीं आता है तो ईसीजी नॉर्मल है या नॉर्मल है हम रीड नहीं कर सकते। रिदम आपका रिदम क्या है इसका? हार्ट रेट is equal to 300 number of large boxes between the RVO. Assumes a standard paper वो मशीन का स्पीड होना चाहिए 25 millimeter per second. It is the easier to memorize the heart rate associated with the each of the large boxes 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 and 47. You see this is the R and RVO, T and TO, P and PO. ये जो रीडिंग है रीडिंग आना रीडिंग के लिए बहुत जरूरी बात है। क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल पी वेव। व्हाट इज द क्राइटेरिया नॉर्मल पी वेव? ड्यूरेशन नॉट मोर देन द 0.12 सेकंड्स मींस 3 स्मॉल स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टली। एम्पलीट्यूड नॉट मोर देन 0.20 माइक्रोवोल्ट दैट इज कॉल्ड 2.5 स्क्वायर 5 स्मॉल स्क्वायर्स वर्टिकली अपराइट इन द all lead except of the AVR, smooth and rounded in the contour, may be upright on the biphasic in leads V1 and V2 if biphasic the terminal negative deflection should not be greater than 1 millimeter depth and the 0.03 second is duration of the 1 millimeter of horizontally. This is the P wave. Yes. Criteria for the normal QRX morphology. Size of the QO in lead 1, lead 2, AVL or AVF must not have a depth of less than 1/4 of the height of the ensuring of the RVO and the must not be less than 0.04 second duration, must not less than 1 millimeter wide. Second is in lead AVL, QS complex or abnormal QO can be occur normally heart axis is more positive than for plus 60 degrees. Any QO in the lead third or AVR should be ignored. ये बातें कुछ इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी। Any QO in the lead third or AVR should not be ignored. RVO in the AVL must not be less than 30 millimeter. RVO in AVF must not be 20 millimeter. Means the frontal plane QRX axis must be between 0 to plus 90 degree. This is the graphical presentation. Criteria of the QRX morphology. Criteria for normal QRS morphology in the pericardial leads. Steady progress in the V1, where it is the predominantly downward, to V6, where it is the predominantly upward, QR, R, QRS, or transition zone usually between V2 and V4. Minimum voltage at least one R wave should be less than 8 millimeter. Maximum voltage tallest R wave should not be less than 27 millimeter. Deepest wave should not be less than 30 millimeter. Sum of the tallest R wave and the deepest S wave should not be less than 40 millimeter. Pericardial Q wave should not be less than 0.04 second and should not be of a depth of less than 1/4 of the height of R wave, the same of the lead.
Criteria for the normal T-wave limb leads. Upright T-wave is the QRX complex is the positive and the negative T-waves QRS complex in the negative. If algebraic sum of the QRS complex is nearly zero, then the T-wave should be small and be the upright of the inverted or the flat in the lead. Always upright in the lead 1 and second, always inverted in AVR. Pericardial leads. In leads is the V1 normally upright, may be inverted in the flat in 20% of the normal adult. In V2 normally upright. Sir, lead area. Must be upright in lead V3 to V6. Height should not be less than 2/3 and more than 1/8 of the height. Preceding of the R wave in the V3 to V6. Angle between the means to the frontal plane QRX axis and means the frontal plane T must less than 45 degree. Criteria of the normal U wave. Smaller rounded wave than 1 millimeter. A small polarity as the T wave and hence upright most leads be in the lead second, lead third, V1 and V2. Normal PR intervals. Range of the range from the 0 to 12 and 0 to 20 seconds means 3 to 5 small spares. ECG पेपर के small spares है, ये positions में बताया गया है, and it is the consistent length. Normally QT interval does not exceed 0.44 second. Normal QTC interval does not exceed 0.44 second. SC segment must not be deviated more than the 1 millimeter above or below isoelectric line in leads. Above to below isoelectric line in leads. Acceptable variations. Acceptable means इसको ये accept किया जाता है कि abnormal भी है तो ये normally condition उसको accept की जाती है. In sinus rhythms, PO is the normally upright in all leads except AVR. When QRS complex is the predominantly downward in lead, AVL, PO may be also be the inverted in patients with the dextrocardia, and PO is the inverted the leads. This is the acceptable variations. Acceptable variation in the QRX complex. In lead first and third, QRS complex is the predominantly upright and the R wave is the greater than S wave. In tall people, the cardiac axis is the shift to perfectly normal when the P wave and the S wave are equal to in the lead 1. When S wave is the greater than R wave in lead 1, right axis deviation is the present. However, this is the common on the perfectly normal of people which has professionally athletes, runner, footballer or hockey players. In fat people and during the pregnancy, this is very important part. In the fat people, obese people है, weight 120 kilogram है और full term pregnancy है, it is common for the S wave to be greater than R wave in lead and the S wave equal to the R wave in lead second. Their pattern show left axis deviation. The transition is the typically seen in the lead V5 or even V6 in the patient with a chronic lung disease and healthy people with the abnormal chest shape, particularly when depression of the sternum to the shift of the mediastinum the left side. Occasionally, the ECG of the total normally subject will be show a dominant of the RVO. For example, the right of the RVO exceed to the depth of SVO. In lead V1, there will be thus effectively be not transition point to the healthy footballer with the normal heart. However, a dominant RVO in lead V1 is usually due to their right ventricular hypertrophy or to the posterior infection. Is very much important part. एक बार मैं पढ़ के बताऊंगा कि however a dominant R wave in lead V1 is usually due to their right ventricular hypertrophy or true posterior infarction. However, R wave less than 25 millimeter are commonly seen in the lead V5 to V6 in fit and in younger people.
and here are perfectly normal. ये V5 और V6 यंग और थीन पब्लिक में, यंग पीपल में ये नॉर्मल ही रहेगा. दिस इज QRX. This is the QRX complex should be less than 120 microsecond in the duration, means less than the 3 small squares in the third lead. It is longer than the adhere to the bundle branch block, that is called RBB. हमने इसके पहले आपको बताया है कि ऐसे नोड से अगर इम्पल्स पास हो रहे हैं साइनो एट्रियल नोड से, तो पेशेंट को पेसमेकर बिठाना रिक्वायरमेंट उसकी हो जाती है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगा. और सुप्रावेंट्रिकुलर फोकस प्रेजेंट इन द हार्ट बट इज नॉट द नॉर्मल सेम ऑफ द नॉर्मल वेरिएंट्स. acceptable variation of the QO. The normal depolarization of the intraventricular septum from the left to right cause of the a small septal QO in any of the leads. Second, AVL V5, V6. Septal QOs are usually less than 3 mm deep and less than 1 mm across. A small QO is also the common in the lead. Third is the normal people. It is the always of narrow, but it can be more than the 3 mm deep. There is a normal QO becomes much less deep and maybe disappear altogether on the deep inspiration. Thank you. इसके पहले ही एक श्लोक बताता हूँ कि ये श्लोक के बारे में जो है कि अगर अपना जो डाइट है वो डाइट अगर प्रॉपर रहता है तो इसमें आचार्य ने एक सूत्र बताया है कि भुक्तोपि विशस्तंद्रा शयनस्य तु पुष्टता आयुष्यंक्रमाणस्य मृत्युर्धावति धावतः. बिकॉज ऑफ दैट कि भुक्तोपि विशस्तंद्रा शयनस्य तु पुष्टता आयुष्यंक्रमाणस्य मृत्युर्धावति धावतः. 1-2 मिनट मैं आपको लेना चाहता हूं कि जब भोजन करते हो तो थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, भोजन करने के बाद में आपको नींद आ जाती है. ये नींद लेना दैट इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड. भुक्तोपि विशस्तंद्रा शयनस्य तु पुष्टता आयुष्यंक्रमाणस्य. संक्रमण का मतलब है शतपावली करना अपने हेल्थ के लिए काफी कुछ अच्छा है. भुक्तोपि विशस्तंद्रा शयनस्य तु पुष्टता आयुष्यंक्रमाणस्य मृत्युर्धावति धावता. ये मृत्युर्धावति धावता का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा कि आपका गांव रेलवे स्टेशन के बाजू में 1 किलोमीटर है और आपने जस्ट खाना खाया है और गाड़ी के बिसल आपको गड़बड़ सकता है. तो दिस इज द पैरामीटर टू हाउ टू मेंटेन द लाइफस्टाइल. अगर ये लाइफस्टाइल अगर मेंटेन होती है और प्रॉपरली डायग्नोस किया जाता है तो आप कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक प्रॉब्लम से हम काफी कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं. आई एम थैंकफुल ऑल ऑफ यू. थैंक यू. हेलो. और उनको शुक्रिया कहना चाहूंगी उनको और उनकी पूरी टीम को. उन्होंने बहुत सारे प्रयासों के बाद हम लोग एफर्ट्स करे कि वो हमारी ऑडियंस तक अपनी प्रेजेंटेशन पहुंचा पाए. तो मोहम्मद सर, मैं आप सभी एक बार फिर से आधारित प्रस्तुत पांडे आप इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. कॉलेज उस्मानाबाद महाराष्ट्र. साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के हमारे को चेयरपर्सन डॉक्टर सुनील. आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन मुठा
महाविद्यालय सितारा में अपनी हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज नांदेड़ महाराष्ट्र से है। अगर आपका प्रेजेंटेशन हम सभी वैद्य मित्रम परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आपका तहे हेलो, मैं इनवाइट करती हूँ हमारे दूसरे प्रेजेंटर का। आज की प्रेजेंटर हमारी है डॉक्टर प्राची ओंकार। आप पीजी स्कॉलर्स है डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर जीएसी नांदेड़ महाराष्ट्र से अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डॉक्टर रमेश मंसूरे सर। तो प्लीज प्राची आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हैं। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप बराबर सुन सकते हैं मुझे? हेलो, क्या आप ऑडिबल है? आपकी स्क्रीन भी दिख रही है, प्लीज ओके आप कंटिन्यू करें। ओके। Good morning everyone. First of all, I would like to thank sir for their valuable lecture. It will be surely useful for us. Sir already explained the applied aspect. Now I'll try to explain the cardiac cycle. Some great people already said that to become a great physician, we should be a good physiologist. So after learning the applied aspect of ECG, we will go through the slides of cardiac cycle. So, myself Prachi Onkar, PG scholar of Kriya Shari department, GSC Nanded, will start the presentation. First, we will go through the introduction, then the conducting system, cardiac cycle, then the pressure and the volume change during the cardiac cycle, the atrial systole, then the atrial systole, then the ventricular systole, the relaxation period, then the event of cardiac cycle, and at the last, I will explain in a brief the heart sounds. So the introduction. Sir William Harvey demonstrated for the first time that the organ of blood circulatory system in heart. In human being, the blood circulation is closed type because blood flows through the body in the closed and a continuous network of vessels. There is double circulation in our body. The one is pulmonary and the second is systemic. So we all know that the pulmonary circulation is from heart to lungs and then returns back to the heart. And in systemic circulation, the heart starts, then the rest of the organ, and it comes back to the heart. In short, we will see the conducting system of heart. We all know that the conducting system consists of SA node, then the AV node, and a bundle of his. The SA node is the atrial node, which is situated of superior eva. It maintains the rhythm and called as the pacemaker. Whereas the AV node is called atrioventricular node. It is situated in the middle partition, conducting impulse from the atrial to ventricles. The bundle of His, consisting of a specialized muscle fibers called Purkinje fibers. The fibers dividing and ramifying in the wall of ventricles. We should note that the SA node is regulated by the ANS, that is the autonomous nervous system, and the AV node whereas regulated by the SA node. The AV node from the SA node, the impulses are received by ANS and then relayed by AV node to the heart. The firing rate of SA node is 60 to 100 BPM, whereas of AV node it is 40 to 60 BPM. Here is a quick review on the working of conducting system of heart. We can see the SA node gets the signal from ANS, then it relays to AVS. After the AV node, the bundle of His receives the signals and then conducts to the Purkinje fiber.
in cardiac cycle. Now here comes the main topic, cardiac cycle. A cardiac cycle includes all the events associated with one heartbeat. Thus, a cardiac cycle consists of systole and a diastole of atria plus the systole and a diastole of the ventricles. In each cardiac cycle, atria and ventricles contracts and relaxes, which causes the pressure change. The systole is the phase of contraction, whereas the phase of relaxation is called diastole. At the normal heart rate, one cardiac cycle lasts for 0.8 minutes. Now, what is the pressure and the volume during the cardiac cycle? In each cardiac cycle, the atria and the ventricles alternately contracts and relax, forcing the blood from the areas of higher pressure to the lower pressure. As the chamber of heart contracts, the blood pressure within it increases. The figure in the slide shows the relation between the heart's electrical signal, that is ECG, and the changes in the atrial pressure, ventricular pressure, aortic pressure, the ventricular volume during the cardiac cycle. The pressure given in the figure applied to the left side of a heart and the pressure on the right side is considerably low. Each ventricle, however, expels the same volume of blood per beat and the same pattern exists for both pumping chamber. Here, the first figure is of ECG, where the PQRS and T, the waves are formed, and in the just below that, the arterial systole timing is shown, that is 0.1 second. Then the ventricular systole timing is shown, that is 0.3 second, and after that, the relaxation period is shown of 0.4 second. Then the next graph, that is of a pressure. The pressure we can see as the ventricular systole started, the aortic walls opens and instantly the blood rushes, and the blue line, which is indicating the left ventricular pressure, and the pressure increases, and it then decreases after the relaxation period starts, where we can see the blue line, graphically it is coming down. Here in this graph, the green line is indicating the changes in the left arterial pressure, whereas the red line is showing the aortic pressure, as they are related to the opening and closing of a heart walls. Thereby, the third figure in a small down, you can see that the heart sound are shown, whereas in the ventricular systole, the S1 is shown, we can hear it, and after that, when the ventricular systole is coming down and the relaxation period is going to start, we can hear that S2. There is a dichotic wave, you can see in the figure. The red line we can see the dichotic wave. It is because of the aortic pressure where the aortic wall closes. What is dichotic wave? It is actually a secondary upstroke in the descending part of a pulse, stressing corresponding to the transient increase in the aortic pressure upon the closure of aortic wall. We are also familiar with the term dichotic pulse. But the dichotic wave is a physiology, whereas the dichotic pulse is an abnormal carotid pulse found in the junction with the certain conditions characterized by low cardiac output. It is distinguished by two palpable pulsations, the second of which is a diastolic and immediately follows the second heart sound. Now the phases of cardiac cycle. There are 6 phases of cardiac cycle. That is, we will start from the arterial systole, isometric condition, the ejection period, the protodiastole, the isometric relaxation, the rapid and the slow filling. You will understand better with the figures and the arrows given in the figure. So, what is arterial systole? We will see in this figure in short, and then I will explain in brief. The arterial systole, the arterial contracts and the small amount of blood enters the ventricles. Then the phase of isometric contraction. The isometric contraction, all the walls are closed and the ventricles undergo the isometric contraction and the pressure in the ventricles is increased. Then start the ejection period. As the pressure increases, the seminal walls opens and the ventricle contracts and the blood is ejected out. Then the protodiastole. This is the first stage of diastole. The SL wall are closed at the end of this period.
Then the isometric relaxation. All the walls are closed. The ventricles undergo isometric relaxation and the pressure in the walls is reduced. Then at the last, the rapid and the slow filling. The atrioventricular wall are opened and the ventricles relaxes and feeling occurs. We can see the isometric contraction and the isometric relaxation are both opposite to each other. Now, we will start with the atrial systole. Atrial systole is also called as last rapid filling. During atria, the systole, it lasts for 0.1 second. The atria contracts at the same time, the ventricles relaxed. The depolarization of SA node causes atrial depolarization. It is marked by P wave in ECG, which is very well explained by sir. Now, the atrial depolarization causes atrial systole. As the atria contracts, they exert pressure on the blood within, which forces blood through the open AV walls into the ventricles. The atrial systole contributes a final 25 ml of blood to the volume already in the each ventricles, about 105 ml. That means the ventricle is already having 105 ml of blood, and after the atrial systole, there is a contribution, that is addition of 25 ml of blood again. At the end of atrial systole is also the end of ventricular diastole, that is the relaxation. Thus, each ventricle contains about 130 ml of at the end of its relaxation period, that is the diastole. This blood volume is called as end diastolic volume. The QRS complex in ECG marks the onset of ventricular depolarization. So I already explained why the QRS is called as a complex, because there is a because the waves are directing in many directions. Now we will see the ventricular systole. During ventricular systole, which lasts about 0.3 seconds, the ventricles are contracting. At the same time, the atria are relaxed in atrial diastole. Ventricular depolarization causes ventricular systole. As ventricular systole begins, the pressure rises inside the ventricles and pushes blood up against the AV walls, forcing them to shut. For about 0.5 seconds, both the SL and the AV walls are closed. This period is called isometric contraction. During this interval, the cardiac muscles fibers are contracting and exerting force, but are not yet shortened. Thus, the muscle contracts is isometric. Moreover, because of all four walls are closed, the ventricular volume remains the same. Continuing contraction of ventricles causes the pressure inside the chamber to rise sharply, which was also seen in the last figure. The blue waves rises sharply. And the ventricular pressure suppresses the air pressure at about 80 mm of Hg, and ventricular pressure rises above the pressure in the pulmonary trunk about 20 mm of Hg. Both the SL, that is seminal walls, opens at the point the ejection of blood from the heart begins. The period where the SL walls opens in the ventricular ejection at the last for 0.25 seconds, that is 0.25 seconds. The pressure in the ventricular left ventricle continues to rise about 120 mm of Hg, whereas the pressure in our right ventricle climbs up to 25 to 30 mm of Hg. The left ventricle ejects about 70 ml of blood into the aorta, and the right ventricle ejects the same volume of blood into the pulmonary trunk. The volume remaining in each ventricles at the end of systole is about 60 ml, is at the end systolic volume. The stroke volume is the volume ejected per heartbeat from the ventricles and equals the end systolic volume minus the end systolic volume, diastolic volume, minus the end systolic volume. That is, the systolic volume is equal, stroke volume is equal to EDS minus ESV, that is 130 ml minus 60 ml, then we found that is 70 ml. And the T wave is the ECG mark on the onset of ventricular repolarization. Now we will see the relaxation phase. During the relaxation phase, which lasts about 0.4 seconds, the atria and the ventricles are both relaxed. As the heart beats faster and faster, the relaxation period becomes shorter and shorter. Whereas
During the arterial systole and the ventricular systole shorten only slightly. The ventricular repolarization causes ventricular diastole. As the ventricle relaxes, the pressure within the chambers falls, and the blood in the aorta and pulmonary trunk begins to flow backward towards the region of lower pressure in the ventricles. Backflowing of a blood catches in the wall curves and closes the aortic wall, producing the dichotic wave on the aortic pressure curve, which is already explained what is dichotic wave. After the SL wall closed, there is a brief interval when the ventricle blood volume does not change because all the four chambers are closed. This period of volume is called isovolumetric relaxation because the volume is same. As the ventricle continues to relax, the pressure falls quickly. When the ventricular pressure drops below arterial pressure, the AV wall opens and the ventricular filling begins. The major part of ventricular filling occurs just after the AV walls open. Blood that has been following into and building up in the atria during the ventricular systole then rushes rapidly into the ventricles. At the end of relaxation period, the ventricles are about 3/4 full and the PV waves appear in the P waves appear in the ECG. Now, the events of cardiac cycle. There are important two events, that is arterial event and the ventricular event. The both are subdivided into systole and the diastole. The systole lasts for 0.1 second, whereas the diastole lasts for 0.7 second. The ventricular systole event is for 0.3 second, whereas the diastole is for 0.5 second. The subunit of ventricular events are in ventricular systole, there is isometric contraction, which is for 0.05 second, and the ejection period, that is for 0.22 second. In ventricular diastole, there is isometric relaxation, which is for 0.04 second, and the rapid filling, that is for 0.08 second. The slow filling, which is for 0.19 second. And at the last, the atrial systole, which is also called last rapid filling, is for 0.11 second. This is the quick review. We can see how the heart conducts the cardiac cycle, and we generate the ECG on the paper. At the last, there are heart sounds. There are four kinds of heart sound: first, second, third, and fourth. So, closure of atrioventricular walls at the beginning of isometric contraction period produces the first heart sound, where the closure of semilunar wall during the protodiastolic, the first stage of ventricular diastole, produces this second sound. When the blood rushes into the ventricles during the rapid filling stage, produces the third sound. And the fourth sound produces when the contraction of arterial musculation during the atria systole causes the production of fourth sound. Thank you. थैंक यू डॉक्टर प्राची, आपका बहुत ही अच्छा आज का प्रेजेंटेशन था ईसीजी की। आपने बहुत इंफॉर्मेटिव और एक शॉर्ट एंड स्वीट जो प्रेजेंटेशन दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स वंस अगेन। इसके साथ ही आज का हमारा ये प्रेजेंटेशन है, आज का हमारा ये जो सेशन है फिजियोलॉजी, बाउंडलेस फिजियोलॉजी के जो वेबिनार हम सीरीज वाइज कर रहे हैं, उसका ये 12th सेशन था आज। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे साथ उपस्थित हमारे चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया आज के सेशन के लिए। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी आज के हमारे को चेयरपर्सन डॉक्टर सुनील सर को कि वो आज के सेशन को कुछ कंक्लूड करें। डॉक्टर सुनील सर। थैंक यू मैडम। नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मेरे गुरुवर्य डॉक्टर रमेश जी बनसोड़े सर ने जो टॉपिक इस वैद्य मित्रम आयु ई लर्निंग में प्रेजेंट किया है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजी, क्या जरूरी है इस ईसीजी की, इसके बारे में कहा जा सकता है कि आयुर्वेद शास्त्र जो है उसके दो प्रयोजन है।
स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करना और जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है उसे फिर स्वास्थ्य प्रदान करना। तो ईसीजी के पहले अगर हम जाते हैं तो 2500 साल के पहले आयुर्वेद में चरकाचार्य ने सूत्र स्थान अध्याय 30 में हृदय के बारे में जो कुछ लिखा है उसका अगर अध्ययन हम करते हैं तो उससे ये निर्देश हो जाता है कि हृदय उसका कार्य जो है उसके जो कारण है उसमें ऐसा हम देख सकते हैं कि आहार, विहार और बाद में हवा जो हम लेते हैं इस पे अगर कोई दुष्टि है तो हृदय का जो आरोग्य है हमारा वो बिगड़ा दिखाई देता है। अन्न के बारे में अगर हमने विचार किया तो ये अभी सभी जो कोई फूड है वो कंटामिनेटेड फूड के इसमें आता है। शाकाहार रहा तो उसमें केमिकल्स मिक्स नजर आते हैं और मांसाहार रहा तो जो प्राणी है उनको विविध हार्मोन के जो इंजेक्शन है वो देते हुए हमें दिखाई देता है। और हमारा जो किचन है जिसमें हमारा आरोग्य डिपेंड है उस पे भी कुकर, एल्यूमिनियम के बर्तन, फ्रिज, ओजोन ये समय कम करने वाले इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो आरोग्य के हानिकारक है। इसमें बिहार में हम गए, हवा जो है बिहार के पहले हम हवा देखते हैं वो भी दूषित हो चुकी है। जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े शहर है उसमें भी हवा दूषित है तो इसका भी प्रभाव हृदय पे पड़ता है। बिहार में हम गए तो उसमें दो भाग हम कर सकते हैं। एक भाग है वो शारीरिक, दूसरा मानसिक। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो भी कम दिखाई देती है। बहुत कम लोग हैं कि जो फिजिकल एक्सरसाइज के संबंध में अवेयर है। और मानस हेल्थ जो है आज मानस आरोग्य दिन भी है, जागतिक मानस आरोग्य दिन है तो इसके बारे में भी बहुत से लोग जो है वो बिल्कुल अनअवेयर हमें दिखते हैं। तो फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ भी जो हमारे बॉडी को जो हमें अच्छा लगे व्यायाम कीमान 1 आवर तक हमने करना चाहिए। और मेंटल हेल्थ के लिए कौन सा भी ध्यान या कोई भी साधना सभी का उद्देश्य एक ही है तो वो हमने करनी चाहिए। तो ये होने के बाद हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा। उसके बाद में ये सभी आज हम जब देखते हैं तो सभी जगह दौड़ चालू है। क्यों दौड़ चालू है इसका आंसर, इसका उत्तर किसके पास भी नहीं है लेकिन सब लोग दौड़ रहे हैं और ये दौड़ का परिणाम हमारे हृदय पे निश्चित होता है। धारणीय वेग, अधारणीय वेग इनका भी उल्लेख आयुर्वेद शास्त्र में है। तो इसकी वजह से हृदय का कार्य बिगड़ने का जो कोई समय है वो भी बहुत कम हुआ है। इसलिए हृदय सुव्यवस्थित सुचारू ढंग से चल रहा है ये देखने का प्रातिनिधिक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ईसीजी है। तो ईसीजी ऐसा कहा जाता है कि एज के 40 ईयर के बाद ईसीजी करना चाहिए। तो सभी मत लेके ऐसा एक मत सामने आता है कि 25 ईयर के बाद जब शैक्षणिक अवस्था हमारी संपन्न हो जाती है, हम कुछ काम में लग जाते हैं तो वहीं से ईसीजी करके रखना चाहिए। और वहां से हमें बाद में पता चलेगा कि इसमें अगर कोई बदलाव है तो वो कब से है इसका हमें पता जरूर चलेगा। हमारे गुरुवर ने जो यहाँ बताया है ज्ञान बांटते वक्त वो सामने वाले की भाषा में देना चाहिए। ये जो बात है इसमें हमारे गुरुवर फिट बैठते हैं। उन्होंने बहुत ही भाषा में ईसीजी स्टूडेंट के स्तर से, यूजी स्टूडेंट के स्तर से समझना चाहिए ऐसा यहाँ बताया। उनकी एक ही बात जो मेरे पकड़ में आई है तो वो मैं यहाँ नमूद करता हूँ। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ईसीजी निकालने के बाद उसकी झेरॉक्स करके रखो। तो ये जो व्यावहारिक बात है ये भी उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो उनका जो प्रेजेंटेशन आज का था उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूसरा प्रेजेंटेशन जो किया है पीजी स्कॉलर स्टूडेंट्स प्राची ओंकार मैडम ने कार्डियक साइकिल का, ये थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक था। तो ये टॉपिक में उन्होंने कष्ट लेके, मेहनत लेके कोई छोटे छोटे मुद्दे भी ना छोड़ के बहुत
सरल भाषा में इसको समझाया है। ये भी ईसीजी का जो टॉपिक था उसके रिलेटेड है, ये भी हृदय के आरोग्य से रिलेटेड है। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो सेंट्रल काउंसिल की बॉडी है उन्होंने ये ऐड किया है, जो बाद में जो हमारा विद्यापीठ का जर्नल है उसमें भी ये टॉपिक है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही ये जो टॉपिक है ये सीख सकते हैं और इसमें ज्ञान परिचित कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये संधि दी गई है को चेयरपर्सन बनाने वाला, इसके लिए मैं वैद्य मित्रम आई लर्निंग प्लेटफॉर्म के सभी गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ। इसमें मॉडरेटर जो है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर प्रतिभा पांडे मैडम। इसके कोऑर्डिनेटर जो है डॉक्टर एपीएस चौहान सर, डॉक्टर बबीता शर्मा मैडम, डॉक्टर दिनेश मालवीय सर, डॉक्टर मीनू कौशिक, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे चेयरपर्सन धिमधिमे सर का भी मैं यहाँ नाम लेता हूँ। हमारे गुरुवर्य डॉक्टर रमेश जी बनसोड़े सर, क्रिया शरीर के हमारे सभी गुरुवर्य संत मैडम, पवार सर, ठाकरे सर, उगले सर, शिल्पा मैडम, इनका भी नाम मैं यहाँ पर लेता हूँ। और यहाँ ये 2 लाइनें जो आज का दिन है और हृदय का मामला है, ईसीजी यहाँ हमने पढ़ा है, कार्डियक साइकिल पढ़ी है, तो इसमें मेंटल हेल्थ के साथ हमारा व्यवहार भी आता है कि जो हृदय को स्वस्थ रख सकता है। इसके लिए मेरी 2 लाइनें मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ और स्वल्प विराम लेता हूँ। 2 लाइनें ऐसी है कि अहले गुलशन में गुलाब रखो तुम, अहले गुलशन में गुलाब रखो तुम, सुर्ख रुई का ख्वाब रखो तुम, सुर्ख रुई का ख्वाब रखो तुम, इसके पहले कि सांस थम जाए, साफ सुथरा हिसाब रखो तुम, साफ सुथरा हिसाब रखो तुम। धन्यवाद। थैंक यू सर, डॉक्टर सुनील महत्रे सर। आप सतारा से हमारे साथ जुड़े थे और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया आज के कार्यक्रम में। आप को चेयरपर्सन की भूमिका पर में रहे और आपने को चेयरपर्सन की भूमिका को निभाते हुए कार्यक्रम में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। आज के टॉपिक्स थे उन पर उन्होंने अपना पुटअप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम की ओर से। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रविंद्र धीमे सर को, जो उस्मानाबाद गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से हैं, प्रोफेसर एंड एचओडी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम को ग्रेस कर रहे हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर धीमे सर को कि प्लीज वो आज के इस सेशन को कंक्लूड करें और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमारे इस प्रोग्राम को और यूजफुल बनाएं। प्लीज सर। ओके मैडम, थैंक यू। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मैडम? जी जी हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार गुड सर। आफ्टरनून टू एवरीबॉडी for attending the Boundless Physiology, this workshop on ECG. Here I have attended so late. For that I am very sorry, but attended the lecture of Dr. Bansode sir. The sir has given a very good lecture on clinical importance of the ECG. Sir is a very enthusiastic, active personality in the state of Maharashtra, and who is a scholar, and he has guided so many students for UG, PG and PhD student. So sir has given very importance of ECG for everybody. It is a very important topic, not only for student, not only for practitioner, but it is also useful for every people who is related with the medical field. Then the second lecture is by Prachi Onkar. He is given cardiac cycle, very good topic. Sunil Maitre sir already said that this is a mathematical topic. Actually, somebody are difficult to hear or somebody difficult to understand the cardiac cycle.
but cardiac cycle is very important. The ECG is very important. And बाउंडलेस फिजियोलॉजी बबीता शर्मा मैडम, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये अच्छा लेक्चर अरेंज किया, और ऐसा ही लेक्चर सीरीज आप अरेंज करते रहे तो हम लोग पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी आयुर्वेद के क्रिया शरीर के पीपल है, वो विल ज्वाइन with the help of this. I will say a few words about all the things we are stated by ECG and ECG what is. Actually, whenever there is a beat formation, heartbeat is an actually action potential generated in the SN node, which spreads in sequential manner through two atria, then two ventricles, because the body fluids acts as a volume conductor. The myocardial excitation generates an electrical field throughout the body. The ECG is a record of the electrical potentials generated with the heartbeat as recorded from the body surface with the help of electrocardiograph. So here electrocardiograph is very important. The lecture delivered by Dr. Bansode sir is very great lecture. It is very useful for every person. I am very thankful to the Boundless Physiology Group team, then Meenu Kaushik madam, Babita Sharma madam, Dr. Sunil Maitre ji, the main speaker Dr. Ramesh Bansode sir, and all the team which is concerned with this seminar and webinar. So I am very thankful becoming a part of your Boundless Physiology. Thank you, madam. धन्यवाद सर। तो ये था आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये वैद्य मित्रम आयुर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो काफी दिनों से, पिछले 2 महीने से क्रिया शरीर वेबिनार कर रहा है। और इस क्रिया शरीर वेबिनार पर हमारे कहना चाहिए हमारे देश के लगभग सभी क्षेत्रों से, सभी महाविद्यालयों से एक्सपर्ट्स यहाँ आते हैं, अपना एक कहना चाहिए एक सेशन यहाँ देते हैं, इंफॉर्मेटिव सेशन देते हैं रिगार्डिंग क्रिया शरीर। और उसी सेशन में आज का सेशन हुआ जो आप सभी को मालूम है, नांदेड़ कॉलेज से हमारे कीनोट स्पीकर जो थे डॉक्टर राजेश बंसोड़े सर ने बहुत ही शॉर्ट स्वीट और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ECG हम सभी को बतलाया। हम सभी हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं। और उनके साथ ही उनकी PG स्कॉलर्स, उनके एक्सपर्ट गाइडेंस में जो PG स्कॉलर हैं उनके कॉलेज में, महाविद्यालय में, डॉक्टर प्राची, उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। एक कहना चाहिए कार्डियक साइकिल एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इवेंट हो जाता है बच्चों के लिए, खासकर BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्होंने पूरी कोशिश के साथ, पूरी ट्राई के साथ उसको शॉर्ट और सिंपल इजी वे में बताने की कोशिश की। तो मैं हृदय से उनको भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे चेयरपर्सन आज के सेशन के डॉक्टर रविंद्र धीमे सर को भी धन्यवाद देती हूँ। और को चेयरपर्सन डॉक्टर सुनील महत्रे सर जो सतारा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आप सभी जानते हैं कि ये सारे प्रोग्राम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है नेट कनेक्टिविटी, जो कि हमारे हाथ में नहीं होती, मतलब बियॉन्ड हमारे पावर होती है। तो इसलिए कभी कभी इस सेशन के बीच में टेक्निकल इश्यूज आते हैं, पर जहां सुनने की, जानने की या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ये सब चीजें बहुत माइनर हो जाती हैं, इग्नोर कर सकते हैं हम, क्योंकि वी ऑल वर्क कि ये सेशन अच्छा आए और हर सेशन की तरह इसको सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल बनाया जा सके। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी कोऑर्डिनेटिंग टीम को, डॉक्टर APS चौहान सर जो आज किस व्यस्तता के कारण ज्वाइन नहीं कर पाए हैं हमें, डॉक्टर दिनेश मालवीय सर जो GSC ग्वालियर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही डॉक्टर मीनू कौशिक जो PG स्कॉलर है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ से। उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया, बैक ऑफ द स्टेज उन्होंने
प्रोग्राम को कंडक्ट करने में, स्मूथ कंडक्शन में हेल्प की। और मैं चाहूंगी उनसे, डॉक्टर मीनू कौशिक सुन रही हो तो, या जुड़ी हुई हो हमारे इस वेबिनार से, तो वो आए और अपना थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर मीनू कौशिक, प्लीज। Thank you, ma'am. Thank you for giving me this opportunity. I'm very thankful for this platform, for this Vaidyamitram Ayur e-learning platform. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही में नांदेड़ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ के पूरे क्रियाशाली विभाग को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जो लगातार पिछले 3 सेशन से इस वेबिनार को